So, welcome back to our DBMS lecture series. In the last class, we have discussed the different type of database users and the key role of database administrator. Today, we are going to learn about the different languages used in DBMS like DDL, DML, DCL, and TCL. These are the tools that help us create, modify, manage, and control the database. So let's explore them one by one with examples. So let's make out our heading, which is DBMS, like language. Okay. So uh, DBMS language is a set of commands that allows users and administrator to interact with the database. Okay. So a DBMS language is a set of command or instruction you can say that allows user and administrator to interact with the database. Okay. So there are mainly four type of languages, which is DDL, second one is DML, third one is DCL, and fourth one is TCL. Okay. So let's discuss one by one. So first one is data definition language. Okay. So it defines the structure of the database, and second point is commands are used to create, modify, and delete database objects. Okay. So the main commands are like the main commands are like first one is create. Okay. For creating new table or database. Okay. And second one is alter, which is used for modify a table or database. Third one is drop,
which is used to delete or which is used to delete a database, okay, or database. And the last one is truncate, which is used to remove all record but keeps structure. So let's understand what it means, like what's the difference between drop and truncate. So drop, it will basically remove the database directly. It delete all the tables, all the schema of the database, or and truncate means it remove all the table only. It's not all the records, sorry, all the record, but not deleting the schema of the database. Okay, so these all are four commands in the data definition language, which is DDL. So let's see the query for this all. So so now we will see the command for creating, alter, and drop and truncate for the table and database. So first command is for creating. First command is like create. Okay. तो इसका आप ऐसे लिखोगे create database college DB। इसका क्या मतलब हुआ? क्रिएट, ये आपका क्रिएट करेगा डेटाबेस कॉलेज डीबी के नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट यू विल राइट क्रिएट टेबल स्टूडेंट and you will put what you want to and you will put the attribute। okay, so attribute हो सकता है आपका जैसे रोल नंबर एंड इसका टाइप। ओके, तो आपको इंट देना पड़ेगा। एंड आपको मैं पहले भी बताया था कि ये जो हमारा रोल नंबर जो है वो हमेशा प्राइमरी की होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि ये आपका कौन सा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे कि प्राइमरी की, फॉरेन की और भी सारा की होता है, कंपोजिट की, ये सब क्या होता है। तो अभी के लिए आपको प्राइमरी की यहाँ पे लिखना होगा, प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट आप लोग नाम डालिएगा, नेम वेर कैर ऑफ साइज 50 एंड नेक्स्ट एज डाल दीजिएगा, एज आपका इंट में। ठीक है, तो ये आपका जो है एक टेबल बन के रेडी हो गया। दिस इज हाउ वी कैन यूज द क्रिएट कमांड। ओके, सो okay, so moving further to the next command, which is alter।
अल्टर कमांड। तो अल्टर क्या होता है? इट क्रिएट, अल्टर मीन्स मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर। ओके, जैसे आप यहाँ पे टेबल का एक स्ट्रक्चर बना ना कि रोल नंबर आपका ऐसे होना चाहिए, नेम है और एज। तो ऐसी अल्टर जो है उसको जो है क्या करता है, आपका मॉडिफाई करने के काम में आता है। ठीक है, तो अल्टर कमांड के बारे में अब देखते हैं। तो इसका ऐसे लिखाते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम which was student db, and you will write like add email. Okay, add email varchar 100। तो इसमें आप बता रहे हैं कि आपका जो है एक नया जो है एट्रीब्यूट ऐड करो ईमेल के नाम से, जिसका जो है साइज वो 100 होना चाहिए। ठीक है, एंड यू विल राइट अल्टर टेबल student, and you will use the modify age varchar 3। तो जो है आप इससे जो है किसी का जो है आप एक नया एट्रीब्यूट ऐड करवा सकते हैं, या फिर आपका जो पहले से उस टेबल में प्रेजेंट वैल्यू उसको आप मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द अल्टर कमांड। व्हाट्स हैपनिंग गाइस? Just a minute. Yeah, so we have seen the alter command also. So let's moving further to the drop command. So drop, okay. So it basically used to the delete a table or database. So how you can delete it? So you have to write drop table student। ओके, तो इससे जो है आपका वो टेबल जो डिलीट हो जाएगा। और यू कैन राइट ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज डीबी। ठीक है, तो इससे आपका जो कॉलेज का जो भी डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ड्रॉप कमांड हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे ट्रंकेट। सो नेक्स्ट वन इज ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट का कुछ नहीं लिखना है, सीधे ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम विच इज स्टूडेंट। तो इससे आपका क्या होगा, आपका जो भी टेबल होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा, आपका जितना भी वैल्यू है उसमें वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। So second language is DML. Second language is data manipulation language।
DML. ठीक है. So the first command is insert. Okay. So add a new record. You are using the insert command. So let's see the SQL query for this. So insert into table name, which is a student, and roll number, name, age, and value. Value you have to give like what value you want to store. So the roll number should be int, and name should be character. So Rahul, and the age is 20. Now you can use insert into a student, value, which is 2. It is values. My bad. Okay. You have to write like values, not value. 2, comma Priya, comma 21. Okay. So this, oh my God, what's happening? Okay, so using this, you can insert value into the table. So let me change the color. Okay, I think this is nice. So okay, so moving to the next command, which is select. So select command. तो select क्या क्या होता है? Retrieval of data. Okay. So select command आप ऐसे लिख सकते हैं. Select select star from student. Okay. And select name, age from a student where age is greater than 20. तो ऐसे जो है आप सेलेक्ट का वो लिख सकते हैं क्वेरी. अगर ये यूज होता है आपको, मान लीजिए कि डेटाबेस में से कुछ आपको सेलेक्ट करना है उसके लिए, ठीक है, या डेटा रिट्रीव करना है. ओके. सो नेक्स्ट वन इज अपडेट. तो अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू 22 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1. ओके. एंड सेमीकोलन से आपको एंड करवाना होगा. तो ओ माय गॉड, शिट. ओके. यस. सो
This is used for the update command. So next is delete. Okay. So delete is basically used for remove records. Okay. So you can write it like delete from a student where roll number is equal to 1. So what it will do, it will delete the record, or it will delete the record or value where the roll number is equal to 1. Okay. So it will delete the all the row. Okay. So next one is DCL, which is called a data control language. Okay. So next one is the fourth one is data control language, DCL. So it used for controlling access. Okay. So let's see the commands which we are using. So first one is grant. Okay. So let's see the query for this. So grant select insert on a student to user one. Okay. So this is the query for the grant command. Uh, just wait a minute, and changing the color from this. I think this is okay. Okay. It's good now. I think this is visual for you. So the second is revoke. Revoke. Okay. Revoke command is used to take back the permission. Okay. So you will write it revoke insert on a student from user one. So this is how you can write the command for this revoke. So there is two only in the data control language. So the next one is uh, transaction control language, which is very important. Okay. Star mark. Transaction control language, which is called a TCL. So it basically used to manage transaction or group or operation. Okay. So command and queries which we are using in this is commit, rollback, save point. तो ये तीन कमांड इसमें यूज होता है. तो सबसे पहले आइए देखते हैं commit. तो commit का मतलब होता है सेव चेंज परमानेंटली. ओके. जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज परमानेंटली हो जाए आपके डेटाबेस में, इसके लिए कमिट कमांड यूज किया जाता है इन द ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ठीक. तो इसका क्वेरी देखते हैं कैसे लिखते हैं.
तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 3 अमित 23। ओके, तो आपने ये वैल्यूज अपने डेटाबेस में डाला और आप नीचे लिख देंगे कमिट। तो कमिट क्या करेगा, आपका जो है वैल्यूज है वो परमानेंटली स्टोर करवा देगा इस डेटा सेट में। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कमिट इज वर्क। So I think this is look good. So moving to the next, which is rollback. Rollback. A rollback is like undo last change. Okay, the last change what you have did, for undoing that part, we are using rollback function or rollback command you can say। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, delete, let me change the color, so delete from student where roll number इक्वल टू 3। तो ये क्या करेगा, ये आपका डिलीट कर देगा, और अगर आप रोल बैक किए करेंगे तो आपका जो है जितना भी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने रोल नंबर 3 पे जो है अमित का जो है वैल्यू सेव करवाया था और उसका एज, तो कमिट से जो है ये परमानेंटली चेंज हो सेट हो गया, सेव हो गया, परमानेंटली सेव हो गया हमारे डेटाबेस में। और आप इसको जो है डिलीट कर दिए, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दिए तो आपका जो है रोल बैक करने से वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ rollback works। So the next is save point। Save point, तो save point क्या होता है, इसका पहले हम लोग it make a point। okay, it mark a point basically। this is how this is only its work। so let's see how it will work। what's the query for this? So you have to write it something like save point sp1, okay, update student set age is equal to 25 where roll number is equal to 1। okay, so you will write roll back to sp1। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका, जो भी undo on the change after sp1। ठीक है, तो अब जो भी आपका undo आप करेंगे ना, वो आपका सेव पॉइंट के बाद ही होगा, इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, so undo only change after sp1 या which is your save point 1, not after that, not before। okay, जैसे मान लीजिए आप ये कर दिए, ठीक है, ये लिखे, तो आपका इससे क्या होगा, आप एक सेव पॉइंट बना दिए, तो आपका इसके बाद जो भी आएगा उसी में आप अंडू कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं इससे पहले। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग द एसक्यूएल क्वेरी फॉर द सेव पॉइंट विच कम्स अंडर द ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सो there are 4 type of languages in database management system। First is DDL, in which we are using the command like create, alter, drop and truncate। And दूसरा होता है हमारा DML, manipulation language। So for manipulating the data we are using it। So इसमें कौन कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं, select, insert, update and delete। थर्ड आ गया हमारा DCL, तो इसमें हम लोग करते हैं ग्रांट और रिवोक
एंड नेक्स्ट वन इज TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें जो हम यूज करते हैं तीन, विच इज कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ठीक है। तो सो दैट वाज ऑल अबाउट द DBMS लैंग्वेज। So So today we have not only studied the concept but also saw the practical queries for each command. So in the next lecture we will cover database keys such as primary key, foreign key, candidate key and super key, which are essential for the relational database. So thank you for watching. Keep practicing these queries in SQL and doesn't forget to like, subscribe to stay updated with the next lecture. See you soon. Bye bye.